The last two on which I want to elaborate. 157 new nursing colleges are being created. This also creates jobs both for domestic and international workers. Then sickle cell anemia elimination mission, which is very important for some tribal areas. And new program for research and innovation in pharmaceuticals are the highlights I would like to say for the health area. And finally, sir, the green growth, 35,000 crore towards capital investments in energy security, energy transition, which is being given to the Ministry of Petroleum and Natural Gas. Energy storage projects are being taken up. Funds for scrapping polluting vehicles for both center and states are being given. Amrit Dharohar for conservation of wetlands are being taken up. Exemption of excise duty for blended compressed natural gas. Customs duty exemption for capital goods needed for lithium-ion cells for batteries in electrical vehicles, and green hydrogen mission. So in a gist, I tried capturing all those topics under which the budget had a lot of provisions here and there, but I've put it all together to summarize here, sir. Now I go to those 15 particular groups of issues on which honourable members have spoken. I'll group it all together on behalf of the members and try to address them. The fiscal glide path is the first issue, maintained at the cost of reduced food and fertilizer subsidy. That was a member's apprehension which was put here, saying allocation for food and fertilizer subsidy has been drastically reduced. Was a, if I can call it as an allegation was levied. I want to say here, sir, leveled. 2015-16 till 2019-20, food subsidies have been in the range of 1 lakh crore to 1.12 lakh crores. I'm talking about 2015-16 to 2020. Whereas now in this budget, for 23-24, the projection for food subsidy is 1.97 lakh crores. So it is far higher, in fact double than what was being given in 1920 or even earlier. The provision for food subsidy available in the budget of 23-24, sir, is adequate, we think, to cover all the anticipated expenditure for the PDS operations. And therefore, that's not even less. The increase in food subsidy in the last 2 financial years is due to the PM Garib Kalyan Anna Yojana to 80 crore people. So the central government now, under the new PM Garib Kalyan Yojana, which has been introduced since December 2022, in the last 2 financial years, I've already said, in the December allocation of PM Garib Kalyan Yojana, which will continue to the Antyodaya and the priority households, the central government will bear all costs of the PDS operation with no cost to the beneficiary or even to the state governments. The entire cost will be on the central government. So, there is just no reduction in the food subsidy, and therefore on that behalf to allege that I'm maintaining fiscal consolidation at the cost of reducing food subsidy is completely wrong. Sir? देखो मैं आपको एक सुनो पहले 5 ही तो मिलता था यार. अरे सुनो अधीर बाबू you are a very senior member. Continuously disturbing, it is not to your stature, I am telling you. It is not fair on your part. अरे बैठिए यार ऐसे. Sir, today Adhir ji is very conscious. Adhir ji is very conscious. I have always my respect. I have a great respect. Thank you. Surely, with that respect in place, even from my side, Adhir ji is very conscious. 5 kgs कम हो गया है.
इनके एनएफएससी 2013-14 में कितने राज्य में एनएफएसए implement किया गया था? कोई 7 states only agreed to go along with them, and even in that it was only 5 kgs. Suddenly क्योंकि मोदी जी ने गरीब के लिए कोविड के समय +5 kg. अरे आई ऑल्सो हैव रेस्पेक्ट फॉर यू आदिर जी, सुनिए ना, क्षमता रखना चाहिए सुनने में. NFSA 2013-14 sir, only 7 states took, and what did it give? It gave 5 kgs. गरीब के लिए, क्योंकि कोविड के समय किसी गरीब भूखे ना रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी एडिशनल 5 kg दिया. वो एडिशनल 5 kg को अभी याद दिला रहे हैं. आप तो पहले से नहीं दिए. 5 kg बोले, 7 स्टेट्स में किए, बाकी देश भर में नहीं किए. आज आ गए इतना गरीब के लिए, क्या बात है जी. सर, अनदर पॉइंट वाज वो गरीब के लिए फूड को कटवा दिया, इसीलिए आपको फिस्कल कंसोलिडेशन हुआ. आई प्रूव्ड इट. नो. नाउ आई कम टू द फर्टिलाइजर सब्सिडी सर. 2015-16 मैं उनके 13-14-12 में नहीं जा रही हूं अभी. 2015-16 to 2019-20 में fertilizer subsidy has been in the range of 65,000 crore to about 80,000 crore. Then in 22-23, that is this year, provision for fertilizer subsidy was about 1.05 lakh crores. In this budget, which is under consideration here in this parliament for 23-24, this has been raised to 2.25 lakh crores. Sorry, 22-23 के लिए this साल has been raised to 2.25 lakh crores. Why was this raised for the current year so much? Because international prices went up. We had to import at a very high cost. On this, there is some data which I'd like to share with you, sir. Ek bori, which is 45 kgs, I think, of fertilizer, was somewhere in the range of 220 rupees. Whereas we had to import it somewhere in the range of 2,800. The very same 45 kg bori was 2,900 something, approximately. The import cost had gone up. We imported it all at that cost, but did not put the burden on the farmer. किसान के ऊपर एक पैसा ज्यादा तब भी नहीं लिया, अभी भी नहीं लिया. ये टोटल केंद्र सरकार के ऊपर है. ओके? सर, आई वॉज, एक मिनट सर, क्योंकि हमारे वेरी एक्टिव मेंबर ऑनरेबल गोगाई इस विषय में उठे, मैं जो विषय बाद में बोलना चाहती थी मैं अभी ही बोल रही हूं. एक्साइज ड्यूटी जब ज्यादा हुआ, फॉरेन प्राइस जब, इंपोर्ट प्राइस जब ज्यादा हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी 2 बार एक्साइज ड्यूटी को कम करके जनता के ऊपर बोझ ना हो ऐसे स्टेप लिया. नवंबर में और जून में, नवंबर 21, जून 22 में. एक मिनट सर, उस विषय में बोलना चाहती हूं. तब से लेकर आज तक हम तो जनता के ऊपर बर्डन कम हो इसीलिए एक्साइज ड्यूटी को कम कर रहे हैं. इसके उल्टा करने वाले स्टेट्स का नाम लेना चाहती हूं सर. सॉरी, मेरा हिंदी सही आ रही है कि नहीं? हम तो प्राइस कटवाने के लिए कोशिश करके नवंबर में 2021 और जून 22 में कटौती की. माननीय प्रधानमंत्री जी बोले कि एक्साइज ड्यूटी को कम करो, किए. मगर तब से लेकर आज तक मैं नाम लेना चाह रही हूं. एक पहले किया होगा, आज दूसरे क्या कर रहे हैं, जो भी हो,
उल्टा जनता के ऊपर बोझ पड़ना परवाह नहीं पड़ेगा, करने दो। ऐसे करने वाले लोग का नाम बोल रही सर। एक्टिव हमारे, ठीक है अधीर जी पूरे 2 दिन आप सबका सुना। प्लीज 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 धैर्यपूर्वक सुनिए सर। हमारे एक्टिव मेंबर गोगोई जी, वो उनके हिमाचल के सरकार से पूछना चाहिए, चुनाव जीतकर आने के तुरंत बाद वैट VAT वैल्यू एडेड टैक्स ऑन डीजल 3 रुपए ज्यादा किया, ये उनका है। ठीक है सर। सर और वैट इंक्रीज करने वाले आप हो भाई, वैट इंक्रीज करने वाले आप हो। आप बिना सोचे समझे बात ना करो। आपने वैट इंक्रीज किया डीजल के ऊपर, वो भी सर। इसीलिए वो कभी भी कांग्रेस के कल्चर यही है, आरोप लगाएंगे मगर जवाब देंगे तो हम चिल्लाएंगे, वॉकआउट करेंगे, इधर नहीं रहेंगे। ये उनके तरीका देख लीजिए जे, अभी भी देख लीजिए, सच्चाई सामने आने पर चिल्लाना। सर दूसरा एक और विषय, अरे करप्शन के ऊपर आप डेटॉल से मुंह साफ कर दो भैया, कांग्रेस वाले। करप्शन के ऊपर आप बात कर रहे हो सर। पंजाब में सर आपकी कोई आवाज नहीं जा रही, बंद कर दीजिए। पंजाब में सर, पंजाब सर has increased VAT on petrol and diesel in February 2023, which will lead to an increase in the price by approximately 90 paise per liter. Increase हो रहा है भाई, कम नहीं हो रही है। पंजाब के कोई भी है तो सुनिए सर। केरला सर, हाँ कांग्रेस नहीं है, जरूर कांग्रेस नहीं है। Why? Because I'm telling you. because you are not mentioning the Right? name of West Bengal. Oh सर प्लीज सर ये क्या है सर? प्लीज 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 माननीय सदस्य, प्लीज सर प्लीज 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 सर पश्चिम बंगाल की पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। सर Kerala announced in February 2023 a levy which is I think a social security cess, Kerala government, of 2 rupees per liter of petrol and diesel on both. हाँ अभी माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, इफ आई कैन कॉल हिम दैट, अधीर रंजन चौधरी जी सेड सेस आप कलेक्ट कर रही हो। सेस का विवरण भी मैं देती हूं, कितना कलेक्शन होती है, कितना स्टेट्स को जाता है, मैं बिल्कुल देती हूं उसको। सर ये अगर ये सब है, राजस्थान बाकी भी बोलती हूं सर, स्टेट्स। हाँ राजस्थान नहीं, राजस्थान में गड़बड़ है भैया, पिछले साल के बजट इस साल पड़ रहे हैं सर। उनको तो ये भी पता नहीं है। अम्मा सर, गॉड किसी को भी साल का बजट पढ़ रहे हैं, पिछले साल का बजट पढ़ रहे थे, ये भी सर मैं ये भी बजट पढ़ रहे हैं, पिछले साल का है कि इस साल का है। सर मैं ये भी कंसीड करने के लिए तैयार हूं, गलती हो सकता है किसी का भी, भगवान की कृपा रहे, कभी भी किसी का भी वो हालत होना नहीं चाहिए कि पिछले बजट इस साल पढ़ रहे हैं। आई प्रे टू गॉड ऑनेस्टली
Honestly, galti kisi ka bhi ho sakta hai. I pray to God, nobody should be able to be in that position. But today it happened, so I have to mention it. So nothing wrong, sir. Sir, six, I'm saying about 6 other states, sir, which marginally reduced or didn't reduce at all. But I'm reading all of them together. I don't want anybody to get up and say, no, but we reduced half a paisa, 1 paisa. No, I'm not. I'm saying some reduced something, some others didn't reduce as much as would have been deserving. Whatever marginally reduced, maybe, I don't know. But I'm including them because both the times we expect every state to reduce the burden on the common people. West Bengal did not. Tamil Nadu maybe marginally. Andhra Pradesh, Telangana, Kerala and Jharkhand have not reduced the prices on petrol and diesel till date. As I said, some state probably reduced marginally. So I didn't want to come to this detail at this stage itself, but because there was the context, I had to come even earlier to talk about it. Sabhi BJP states ne come kiye. So, yeah. I'll come to that. I'll certainly come to that. Sir, so for fertilizer subsidy, we had made sure that the burden is not shifted on the farmers. Any increase in cost in imported price, the government, central government is bearing it all in full. And at this stage, in this budget, we have tried making a reasonable allocation. And always it's subject to, if there is more increase, we'll give that much more. But in this reasonable allocation of 1.75 lakh crores has been made in the budget which is before you, 2023-24. Even this is 1.75 lakh crores, sir. And we have earlier, when we didn't make a provision, we still somehow imported it at whatever cost, although we didn't make a provision. That should clearly put our intent before you, saying for farmers we'll never let down. Sir, Manrega, an issue on which a lot of members have spoken, saying, no, the allocation has come down. So that's not true at all. I want to explain how. I want to explain how. The current year BE allocation is 73,000 crore. It had been increased to 89,400 crores in the RE of this running year, 31st March tak. So from BE, even this year, we've shown an increase. It's a demand-driven program, and therefore, whenever there is an increase, we'll come up with the numbers. But this year, we want to also underline the fact that Manrega outlays factors in economic recovery and massive increase in the PMAY Awas Yojana, particularly the rural, where 34,487 crores have been allocated. Other than the allocation for Manrega itself, here similar beneficiaries, similar rural work gets 34,487. The same set of people will have to benefit from it. And the Jal Jeevan Mission gets 10,000 crores, which caters to the same catchment area and also the same beneficiaries. So there is actually no reduction. One, it keeps going up as and when the demand comes. Adir ji, sir, Honorable Speaker, sir, Honorable Speaker, sir. Madam, आप पढ़िए. Sir. There is no connection. Sir. बाबू घर और जल पानी के बीच कनेक्शन नहीं है क्या? आप राइट टू वर्क, ये राइट की मसला, राइट टू वर्क का मसला है. ये किसान गरीब लोग काम नहीं मिलता, गरीब लोग नहीं मिलता, गरीब लोग क्या बोलते हैं? वे गांव से आते हैं, एरिया नहीं मिलता, अब मिलने लगे हैं काम. Sir, Honorable Speaker, sir.
Honorable Speaker, sir. There is demand driven. Yes. Because of demand driven manufacturing, the same thing would have been done in Sir, 1 minute, sir. Sir, it is. I want to just highlight. Just no. I'm quite used to polite and not so polite also. But it is up to the chair. I can't. Sir. Oh, pending payments. I'll come back to that. West Bengal, I have a list to read. Please, sir. Allow me, sir. Sir. Manrega, sir. Sir, please allow me to speak, sir. Manrega, sir. I said I want to respond to Honorable Member Adirji. Huh? And I also take into consideration. Oh, ठीक है सर. Okay, sir. सर, मनरेगा के ऊपर जितना भी चिंता. पश्चिम बंगाल का जरूर बताइए. ये दीदी से जवाब पूछो, ममता दीदी से. सर, मनरेगा के विषय में क्योंकि इतना चिंता वाजिब है. अरे वाजिब है भाई. इतना चिंता जता रहे हैं. पैसा खाते. सर, मनरेगा के ऊपर चिंता वाजिब है. मैं सिर्फ एक लिस्ट से नंबर पढ़ना चाहती हूं. बी के समय एलोकेशन एक अमाउंट है. मैं रिकॉर्ड रख के सामने बात कर रही हूं कि बी एवरी ईयर वी इंक्रीज टू आरई. Clearly we'll increase to RE when the demand arises. We've never let it down. उसका उदाहरण बोल रही हूं सर. 2019-20 से, which is just before the pandemic, 60,000 था, 60,000 crore था पैंडेमिक बजट में, प्री पैंडेमिक बजट में 60,000 crore था बजट एस्टिमेट बी. उस साल आरई में 71,000 तक गया. एक्चुअल रिलीज उसके बाद डेटा आता है 71,687.71 crores. ये 1920 का. 2021 61,500 crores BE. RE 1,11,500. Actual release 1,11,170.86 crore. बढ़ते गए. 21-22 73,000 BE, 98,000 RE. Actually it was 98,467.85 increased allocation. ऐसे इस साल भी 73,000 BE, already 89,400 RE. ये हमारे प्री पैंडेमिक का एक साल और पोस्ट पैंडेमिक का डिटेल. प्री पैंडेमिक का प्रीवियस ईयर्स भी ऐसा ही है. मगर मैं याद दिलाना चाह रही हूं 2009-10 जानना चाहिए प्लीज. हंसी मजाक नहीं है. गरीब रूरल आप हंस रहे हैं ना जी आप सर. वो ऑनरेबल चेयरमैन सर हंस रहे हैं मुझसे इतना. नहीं गोगोई जी प्लीज. अभी he laughed at me. I'm giving details and he's laughing at me. But when it suits him, he says गरीब के लिए हम बात करते हैं, आप बोलो. गरीब के लिए बात कर रही हो, हंस रहे हैं. वो सही है क्या? नो. मैं गंभीरता से उनके पॉइंट को लेकर के जवाब दे रही हूं. हंसना
Yeah, thank you for setting the standards. I'm seeing how it is happening here. Sir, Honorable Sir, 2009-10 में BE 39,100, 2009-10. हाँ, जरूर जाऊंगी. 2009-10, 39,100. 39,100 RE. अरे सुनना Oh, that's not applicable now, ma'am. That's not applicable now, ma'am. Sir, 2010-11, 40,100 BE. How much was RE? वही 40,100, मगर actual spent was 35,841 only. Sir, 2011-12, 40,000 BE. RE 31,000. And actual fund released 29,215. Sir, ये गरीब Sir. चिंता करने वाले गरीब का विषय में पॉलिटिकल नहीं बनना चाहिए जब आपके शीशे के घर ऐसा है. Yes, sir, I'll come. Sir, Honorable Speaker, sir, बंगाल के ऊपर जितना भी प्रश्न उठा रहे हैं उसको मैं पूरे जवाब देती हूँ. जरूर देती हूँ. प्लीज, आई विल गिव. 4 साल का कुल मिला के 1 लाख करोड़ था, जितना तो आपने पिछले पैंडेमिक के टाइम पे दे दिया. सर, ये मनरेगा के विषय सर. एक था एलिगेशन सर, जो अभी ऑनरेबल मेंबर भी जिक्र कर रहे हैं. मनरेगा और पीएम आवास योजना फंड्स शुड बी रिलीज्ड इमीडिएटली टू वेस्ट बंगाल. उस विषय में मैं थोड़ा बात करना चाहती हूं. Various central schemes, sir, which investigate, various central teams which investigated Manrega works in Bengal found serious shortcomings in the works. मैं पूरे बोल रही हूं, आज का विषय भी बोलूंगी. State government was asked to submit action taken report on the observations by the various teams. The state government submitted one set of reports of action taken in 2022, late November, December. And that amount is 5,473 crores. Once the scrutiny is all over, that amount will get released. One. Second, sir, again, this is Awas Yojana, Gramin. Many complaints have been received from MPs and MLAs about irregularities in the implementation of the scheme. Department of Rural Development has constituted a national level monitors who have submitted report of irregularities, including the change of name and logo of the scheme. Branding पूरे के पूरे बदल दिए. ATR has been sought. Sir, ATR was sought from the state government, which was action taken report has come. And after that also, very many questions were, in fact, beneficiary list was asked. Again, complaints were received about irregularities on the list of beneficiaries, which was prepared by the state government, including ineligible beneficiary. Department has sought an ATR again, another action taken report again. So that is one thing. Gram Sadak Yojana, 173 crore is pending for release to the state due to reconciliation related issues between center and state. जल शक्ति और जल जीवन मिशन. No, there are more. I don't want it to appear as though I am saying it all.
and therefore central government is only creating problem. Media reports, sir, this I'll authenticate and submit on the table. PM Awas is for rural poor, but in West Bengal, owners of houses like these are on the list. Same. Sir, it is not me. Yes, sir. So double mansion-like buildings are being built. Is it right? Is it not right that I should investigate, sir? I'll authenticate and submit. I'll authenticate and submit. I'll also come to one more, sir. I'll finish this. Then you can talk, sir, with the permission of the chair. Sir, GST compensation cess. Sir, this you must, honorable member, kindly, with the permission of the chair, I'd like to request you, please he should listen to this particular thing, sir. और ये हम सब के लिए भी एक सबक जैसे विषय है. मैं बहुत ही विनम्रता से ये बात आपके सामने रखना चाह रही हूँ. सर, GST compensation cess. West Bengal says 823 crore is pending for release to the state because the state government has not sent AG certificate. I'm saying 2017-18. But in this bahana, this is not a news report. This is my own office paper I'm reading. I'll just give you this information. It may be useful for the honorable member. Sir, ऑनरेबल चेयर से बात कर रही हूं मैं, ऑनरेबल चेयर के साथ बात कर रही हूं मैं. सर, arrears of compensation released to states, union territories as per AG certificate which is given for the revenue figures. AG का सर्टिफिकेट के साथ कॉम्पनसेशन का रिक्वेस्ट जब पहुंचता है, हम अमाउंट रिलीज करते हैं. वेस्ट बंगाल के डिटेल मैं आपके सामने रखना चाह रही हूं, बहुत ही विनम्रता से. सुन लीजिए पहले आप. कॉम्पनसेशन सेस. सर, बार बार हमें बोला जाता है, चिट्ठी आता है बंगाल से, हमारी कॉम्पनसेशन रिलीज नहीं हुआ. एजी सर्टिफिकेट के साथ अगर आता है, मैं तुरंत रिलीज करती हूं. बट बंगाल के विषय आपके सामने बहुत विनम्रता से मैं रिपीट कर रही हूं, क्योंकि मुझे चकित रह गई हूं ये देखने के बाद. क्या विषय? एजी का सर्टिफिकेट. सर, एजी का सर्टिफिकेट के साथ कॉम्पनसेशन का क्लेम कब से नहीं आया बंगाल से? 2017-18 नहीं आया, 18-19 नहीं आया, 19-20 नहीं आया, 20-21 नहीं आया, 21-22 नहीं आया. फिर मैं क्या करूं सर? एजी का सर्टिफिकेट जब नहीं मिलता, मैं कैसे पे करूं सर? अभी आपने पहले बताया होता ये देने वाले हो आप, तो मैं आपको जल जीवन मिशन का भी आंकड़ा दे देता. कितना कंप्लेन आया? सर सुधीर बाबू इधर. लास्ट एक और विषय सर, बंगाल के विषय लास्ट एक और विषय पेंडिंग है सर. सर, हमें यह बार बार बोला जाता है, केंद्र सरकार बंगाल के खिलाफ है, पैसा नहीं देते. मैं एक और सामने रखती हूं सर, पैसा देने के लिए हम तैयार है, मगर ड्यू प्रोसेस तो फॉलो तो करो. ड्यू प्रोसेस. सर, केंद्र सरकार परमिशन. चेयर सर, चेयर मुझे बोलने के लिए कह रहे हैं, मैं वो बात कर रही हूं सर. सर, केंद्र सरकार हर राज्य को जब उनको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस का मदद चाहिए होता, उनको दे देते हैं. सेंट्रल आर्म पुलिस चाहिए, ले लो. सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का बंगाल को भी डिप्लॉयमेंट के लिए दिए, मगर बंगाल से
हाँ ड्यू, उनकी तरफ से हमें पेमेंट जो करना है, क्योंकि हम तो पुलिस फोर्स दे रहे हैं उनको, उधर से हमारे पास उनके पैसा अगर रह गया तो इतना आवाज उठाते हैं। ठीक है, राइट है उठाने के लिए, मगर हम भी उठाना चाहिए सर। सेंट्रल आर्म फोर्सेस बंगाल के लिए दिए 1841 करोड़ पैसा हमारे उधर बाकी पड़ा हुआ है, नहीं मिला। ये कैसे सर? हम देते रहे। हाँ? उसका ड्यू प्रोसेस पूरा है कि नहीं? सर बंगाल के विषय में मैं ये बात जरूर सामने रखना चाहती हूँ, बिकॉज इट्स मैटर ऑफ डेटा। दे दो। आपको हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मेरे को बचाओ, आप मत बोलो। हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मत सर, बोलो। वेस्ट बंगाल पे और मत बोलो। इसके अनाउंसमेंट इतना भी आपको नहीं मारना चाहिए, निर्मला जी। इतना भी नहीं मारना चाहिए कि हाथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है सर, विद योर परमिशन सर। एक मिनट ज्यादा। मैडम आप सुनिए, मैडम आपको बताते हैं, मैडम आप बोस, अरे उसको तो बैठाइए। तुम्हारा तार कट गया, तार जुड़वाओ पहले। मैडम, myself along with 10 MPs we met Giriraj Singh ji and we had a long discussion for 1 hour. Giriraj Singh ji attended with his full officials and we 10 MPs all together. So he clarified these issues to us and he asked that you send your cabinet minister from government of West Bengal. I went back, I reported to Chief Minister and Chief Minister sent the minister to talk to Giriraj Singh ji. There was a long meeting. Everything was sorted out. But the 7,000 crore rupees are not being released. So, sir, madam, our allegation, you are trying to blockade economically our state of West Bengal. Anti-West Bengal. You are trying to blockade economically our state of West Bengal. Honorable Speaker, sir, he's a very respected member. I have a lot of personal respect for him. I listen for every one of the members. Irrespective of anything that is said in the House, I fully take it because I'm here to answer with due respect. I will do it. Sir, but whilst he may give me, honorable member may give me the details of his meeting with the Honorable Minister Giriraj Singh and everything else, नहीं, allegation एक मिनट, against sir, किसी भी मंत्री से बाहर चर्चा हो, इसको सदन के अंदर बोलना कोई तर्क नहीं है। आप तो आपका जवाब दीजिए। But I would request the honorable member to say बंगाल का ब्लॉक कर रहे हैं, वो नहीं है। हम माननीय सदस्य गलत, detail. मैं बाहर निकाल दूंगा, आपको पोस्ट निकालेंगे। So, what I state here is with facts. I state with facts. I am not giving any figment of my imagination. Sir, then this question of reduction in agriculture allocation. Senior member T.R. Baluji mentioned about it. About 8,000 crores, sir, from RE 22-23 to BE 23-24. What was in the RE of the current running year to the BE of the forthcoming year. 8,000 crores is the increase. It includes outlays for agriculture research, animal husbandry, dairying, fisheries and cooperation sector. PM Kisan sir, also reflects the provision based on beneficiary update. Quite a few members, many of them are not here, but I still will say it. PM Kisan sir, there is a lot of data updation which is going on. Deduplication analysis of beneficiary is being done by the Ministry of Agriculture. So the duplications are being weeded out, and this is not being said for the first time here. In budget at a glance document which was shared along with the budget speech, in page 10,
This explanation has been very clearly given as to what is the deduplication exercise which is going in the PM Kisan. So if people were to ask me, why is it reduced? That is the deduplication spillover, which I want to put it on record as was stated even in the budget at a glance document. So let me now state this, sir. Every eligible beneficiary of PM Kisan will continue to get their benefits. Every eligible one. So there is no reduction. Here, I certainly want to refer to a SBI study, sir, which speaks about what actually has happened in terms of, because quite a lot of members expressed their concern about what happens to the doubling of income for the farmers. Quite a few members mentioned about it. And I will give you not my own analysis, but State Bank of India's report. They have a study group which periodically keeps studying on various different developmental activities. July 2022, their report said farmers' income doubled for the financial year 22 compared to financial year 18 for certain crops in some states. So the process is happening, like soya bean in Maharashtra, cotton in Karnataka, while in other cases, if it didn't double, it at least became 1.7 times the original income. Allied and non-farm income showed, it is true that it is reaching doubling. Allied and non-farm incomes showed a significant increase of 1.4 to 1.8 times in most states, in tandem with farmers' income during the same period. So this substantiates another thing, sir. There's one more. 77th National Sample Survey that the source of the farmer income has become increasingly diverse. सिर्फ खेती से जो पैदावार होते हैं उसके इनकम सिर्फ नहीं, मगर उससे जुड़ा हुआ बहुत सारे कार्यक्रम से भी किसान का उनका आय बढ़ रही है. ये स्पष्ट वो 77th नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा डेटा अभी मिल रही है. सो एसबीआई स्टडी ऑल्सो से सर किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा उनके क्रॉप लोन जो मिलता है, अभी कितने किसान क्रेडिट कार्ड है वो भी हमारे जानकारी रहना अच्छा होगा. 73.7 मिलियन एक्टिव केसीसी, मिलियन मतलब इधर 7 करोड़, am I right? 7 crore 37 lakh किसान क्रेडिट कार्ड एक्टिव है सर. वो किसान खेती भी करें, डेयरी भी करें, फिशरी मत्स्य पालन भी करें, उन सब का मिलजुल करके 7 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड है. उनको इंटरेस्ट रेट सब्सिडी भी मिलते हैं, आसानी से बैंक से लोन भी मिलता है. फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी आजकल ज्यादा से ज्यादा मार्केट लिंक्ड प्राइस से अलाइन ही होता है, उससे एकदम कम नहीं होता. अगर कम होता किसान मार्केट में ही चले जाएगा. ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस कभी भी उनके कॉस्ट और उनके रिटर्न ये सब कैलकुलेट करते हुए हम करते हैं, इसीलिए एग्रीकल्चर इनकम में भी बढ़ोतरी हो रही है. सर फिर इन्फ्लेशन के ऊपर again I refer to Honorable Member Gaurav Gogoi. There's been a wave of external factors which have caused the price increase, whether it is Russia, Ukraine, or even the various disruptions in supply chain. But India's retail consumer price inflation, the CPI, had peaked to 7.8% in April 2022. But now it has come down to 5.7, 5.8%, and therefore it is well within the tolerance band. And this is because, and I would like to seek your indulgence, sir, I want to here specify the various steps that government has taken, and it will be helpful for honorable members to know about it. It is not without effort that these prices, the CPI has come down. UK and Germany are having an inflation rate of 9.2% and 8.5% respectively.
US inflation has also been very high, but ours has come down because of the various steps like reduction in the excise duty on petrol and diesel, prohibition of export of wheat products, reduction in import duties and cesses on pulses, rationalization of tariffs and imposition of stock limits on edible oils and also on oil seeds. ये सब कदम हम उठा रहे हैं जिसके वजह से आज नियंत्रण में है महंगाई. Maintenance of buffer stock for onions and pulses, rationalization and of import duties on raw materials used by manufacturing sector, imposed also an export duty of 20% on rice, brown rice, semi-milled rice, as well as wholly milled rice. So, except for parboiled rice, every export item under rice has been levied with an export duty. And also, I will repeat, so that the poorest of the poor are not suffering, Garib Kalyan Anna Yojana has been extended from 1st January 2023. This will provide free food grains for 80 crore beneficiaries. Import duty on masoor has also been brought to 0%, जिससे हम सस्ते में import कर पाएंगे मसूर को. ऐसे ही central government decided to provide 1.5 million tons of chana to states and union territories at a discounted rate, जिससे सरकार PDS के द्वारा states में चना को सस्ते में distribute कर सकते हैं. चने के prices भी reduce किया गया है. Sir, unemployment के ऊपर मैं already बोल चुकी हूँ, मगर विषय quarterly unemployment rate for urban areas has actually declined. Unemployment has declined from 9.7% in April-June 2018 to 7.2% in July-September 2020. So, employment generation through MSMEs is something which I earlier elaborated on. There was also this very frequently heard concern that health and education had lesser allocation. Even that is not true, sir. Ministry of Health and Ayush, the BE for 23-24, which is this budget which is here, is about 92,802 crores, which is higher than the BE of 22-23 of 89,250. पिछले साल 89,250 था crores health के लिए, इस साल 92,802 हो गया है. बढ़ती आ रही है, ना कि कम. एजुकेशन के लिए सर पिछले साल हमने 1.04 लाख करोड़ 1.04 लाख करोड़ दिए. इस साल हमने उससे बढ़कर के 1.13 लाख करोड़ दिए हैं. इसलिए एजुकेशन का भी कम नहीं हुआ है. So paddy has not been procured. This was a specific, probably, concern by Sri Bhartrihari Mehtab. Odisha is following a decentralized procurement strategy. Under the decentralized procurement strategy, sir, state government undertakes direct purchase of paddy from farmers, rice and so on, and stores it. Distributes the rice under NFSA and other welfare schemes. And the central government undertakes to meet the entire expenditure incurred by the state government on the procurement operations as per the approved costings. Against the given estimate of 56.93 lakh metric tons of paddy procurement during the Kharif season 22-23, 50.54 lakh metric tons of paddy has been procured in the state by the state government and its agencies, which is 26.44% higher than before. So, you are procuring because of the decentralized arrangement, and we are completely with you in terms of meeting the expenditure. So, paddy has not been procured in Odisha by the government. It's not a right allegation. After all, you are the ones who are procuring it. So,
we want to just make sure that we understand this. That's right. So, FCA also, but you are the main drivers there. So there is no, इसके ऊपर कोई आशंका रहने का आवश्यकता नहीं है. उड़ीसा के डिसेंट्रलाइज्ड अरेंजमेंट अभी भी बरकरार है. So, but I thought he was talking about the procurement earlier. I've answered that. Sir, then there were a lot of members who said allocation has not been announced in the budget for MISHTI, Agricultural Accelerator Fund, PM Pranam, Shri Anna Yojana and all that. That will obviously come after we have the budget cleared through the House. Sir. Sir, lastly, quite a few. Sir, I have few things to say, sir. Sir, मैं हिंदी में भी बोलना चाह रही हूँ सर. अगर मेरा गलती कुछ है तो हिंदी में बोल रही हूँ. जो स्कीम्स बजट में अनाउंस किया गया है, चाहे वो मिष्टी हो, एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर फंड हो, पीएम प्रणाम हो, श्री अन्न हो, इन सब का घोषणा तो हुई, मगर पैसा अलॉटमेंट अभी पारित होने के बाद हम करेंगे. वो अभी नहीं है, शिकायत नहीं हो सकता है. Sir, special package for J&K. Sir, special package for J&K. J&K के ऊपर attention नहीं है. I can't see the member, Honorable Hasnain Masoodi ji. मगर I just want to highlight special fiscal support. आपको याद होगा सर, जब मैं सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए विंटर सेशन में आई थी, 9,486 crores have been given for special assistance, special fiscal support for J&K. Then that also includes 850 crore grant for Jhelum Thavi flood recovery project, which is funded by the World Bank. So J&K के लिए जो देना है वो absolutely on the dot हो रही है. additional भी support मिल रही है. Substantial progress has also been made in the implementation since only after 2019, and despite COVID pandemic, the disbursement of 62% of external assistance in 154 million US dollars has also happened post 2019 for Jammu and Kashmir. External assistance के द्वारा भी J&K को 2019 के बाद 62% ज्यादा अलॉटमेंट और डिस्बर्समेंट हुआ है. सर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस माननीय मेंबर सुप्रिया सुले ने उठाया कि नहीं, गवर्नमेंट कलेक्ट सो मच ऑफ सेस in the name of health and education. Where does this amount go? I just want to read the numbers, क्योंकि numbers ही explain करेंगे सच्चाई क्या है. 2021, meaning 2020-2021, 35,821 crores were collected, cess that was collected under the name of health and education cess. From this amount allocated to the Ministry of Education, from this मैं बोल रही हूँ जानबूझ करके, I know this is far lesser. 50,729 for education. Amount allocated for Ministry of Health, 18,498. Total amount spent on that head is 69,228. जबकि कलेक्शन 35,821 ही था. एक्चुअली हमने स्टेट्स को 69,228 तक दिया है सर उस साल 2020-2021. सो सेस ज्यादा कलेक्शन हो गया, हम उसको इधर रख रहे हैं नहीं. जितना कलेक्शन हुआ उससे
ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट सेंटर को, स्टेट्स को दिए। 21-22 का मैं अभी बोल रही हूं, 52,732 सेस कलेक्टेड अंडर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। Amount collected to Ministry of Education, amount allotted to Ministry of Education 56,788, पिछले साल से ज्यादा ही allocation हुआ। Amount allocated to Ministry of Health पिछले साल से ज्यादा ही 25,000 करोड़। कुल मिलाकर के स्टेट्स को सेस, इस कैटेगरी सेस के द्वारा 21-22 में 81,788 दिया गया है। मतलब 52,000 कलेक्ट हुआ, 81,000 स्टेट्स को भेजा गया। सर ऐसे ही 2022-23 का नंबर दे रही हूं जो बीई है। I don't have the total as it is now because we have another 1 month to go. 62,500 crores is the cess expected to be finally collected. इसमें 86,100 is what we expect to give. So not 1 year, I'm giving you the data, have we kept money from the cess. We actually have given more to the states than what we have collected. So total amount for the 3 years cess collected 1,51,053 crores. Actually given 2,37,116 crores. So education and health में सेस जितना कलेक्शन हुई उससे बहुत ज्यादा स्टेट्स को हमने दिया। सो सेस के ऊपर ये शंका नहीं रहना चाहिए सर। Sir, again, here it was question about 15th Finance Commission, the share of the states in the divisible pool, which is 41%. As I'm speaking, I'd like to say 22-23, the share of central taxes is expected, this is the BE figure for 22-23, इस साल मार्च तक 2022-23 का share of central taxes which will have to be collected is 8.17 lakh crore, which was the BE number. But in all probability, the RE would be much more than that. And I roughly say, I hope I'm not going to be pinned down on this, I'm giving at an estimated number, 9.4 lakh crores is what we might get as central taxes. Collection अच्छा होने के कारण ये number 8.17 था, अभी 9.48 लाख करोड़ का एक्सपेक्टेशन RE का। सो डेवल्यूशन में ज्यादा अमाउंट जाना चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूं हर महीना जितना देते हैं हम डेवल्यूशन के फॉर्मूला के तहत उतना देंगे। मगर मैं आज, क्योंकि आज 10 तारीख है, नॉर्मली वी डिस्ट्रीब्यूट डेवल्यूशन ऑफ टैक्स गोज टू द स्टेट्स। इस महीना क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का गाइडेंस इसमें था कि स्टेट्स के हाथ में पैसा डालो, जल्दी डालो, जिससे वो खर्च कर पाएंगे। इस महीना हमने 1 महीना के डेवल्यूशन के जगह पर 2 महीना का ही दे रहे हैं। वी आर गिविंग 2 months इन द प्लेस ऑफ 1। सो स्टेट्स के हाथ में इस महीना जितना पैसा जाना है उससे डबल अमाउंट जाएगा आज के दिन 10th of February। सो स्टेट्स का सेस में भी, डेवल्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेशन में भी कोई कुछ कटौती कमी नहीं है। बार बार हम ज्यादा ही पहले ही दे रहे हैं क्योंकि स्टेट्स के हाथ में रहना अच्छा है, वो खर्च उठा पाएंगे। इतना ज्यादा देते तभी तो पिछले साल का बजट पड़ गया। सो आई वांट टू मेक दैट क्लियर दैट सो आई आंसर्ड ऑन बंगाल सर। सो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के ऊपर they are the market intervention schemes, sir, prices support scheme, PM Asha, price stabilization fund are all overlapping in their mandates. They're all for support of farmers. We will ensure that the support continues.
but they are undergoing rationalization to enhance administrative efficiency. That I want to make clear here. Therefore, accordingly, a token provision under MIS and PSS scheme has been made in this budget. Necessary provisions will be made during the course of the year upon approval of the rationalization of the three schemes that I mentioned. Sir, I think on tribal affairs, there were quite a few questions. Promise was made to recruit 38,000 teachers in Eklavya schools. That has not been fulfilled. Honorable members not here, Shri A. Raja, he raised this question, but I want to give that response there, sir. Under this scheme, residential schools to be established in each block with 50% or more tribal population. At least 20,000 tribal population जहां है वहां ये एकलव्य स्कूल बनाने के. Altogether, 740 eklavya schools are scheduled to be established across the country, out of which 690 eklavya model schools have already been sanctioned and are remaining to be, and the rest are remaining to be sanctioned on receipt of land details from the concerned states. Presently, 401 such eklavya model schools are functioning with an enrollment of 1,13,275 students. We are talking about tribal students who are registering in eklavya model schools. And therefore, this budget has made a provision for recruiting 38,500 teachers for all the 740 eklavya schools. And this announcement has been made in this budget. And in a phased manner, within 3 years, this whole recruitment will be completed. Sir, I'm coming to the last issue, sir. That is the 15th issue. Reduced allocation for minority affairs. Adir ji uske upar bahut hi chinta jataye. Sir, first of all, I'll go to the details of it. First of all, sir, हम वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करते, सबका साथ सबका विकास करते. जिनका एलिजिबिलिटी हो फेलोशिप के लिए, चाहे वो कुछ भी मजहब का हो, कम्युनिटी का हो, लैंग्वेज का हो, उन सबको फेलोशिप मिलता है किसी ना किसी हेड पर, ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा, सोशल वेलफेयर के द्वारा, कोई ना कोई कैटेगरी द्वारा सबको मिलता है. We don't believe in vote bank politics. And therefore, we have very clearly, and in this case, I want to get into the detail to tell you, Honorable Minister of Minority Affairs had only a couple of days ago, through Twitter, said so many details of what this is being discussed about. She says, students across all categories, I'm quoting here, students across all categories, irrespective of community, are eligible for Junior Research Fellowship Scheme of the UGC and the CSIR. Moreover, students from minority communities are also covered under the fellowship schemes of other ministries, including Ministry of Social Justice and Empowerment and Ministry of Tribal Affairs. So clearly, and then she goes on to say, in the last 8 years, I'm quoting again, sir, in the last 8 years, more than 21,100 minority students have been granted loans worth 289 crore through the National Minority Development and Finance Corporation, the NMDFC, against 17,200 beneficiaries during 2006 to 14 UPA regime. उस समय 17,200 था, अभी 21,100 minority students को मिल रही है. हमारा न्यू इंडिया और हमारे प्रधानमंत्री जी के क्लियर फोकस ये सबको साथ दो, सबका साथ, सबका विकास, किसी का किसी कारण में बाहर निकालना नहीं है. Inclusive development means whoever eligible will get it. That is how gas was distributed to everybody. That was how houses were given to anybody. We didn't discriminate. Whoever has got to get it will get it. Whether it is house, whether it is toilet,
whether it is water, whether it is gas, everything is distributed to every Indian citizen who is eligible. So उसमें कुछ अंतर नहीं है. आपकी बजट में मुद्दा कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से एलोकेशन कम हुई, आप खुद देख लीजिए. सर, एक और विषय सर. It's very audible. Thank you. Very audible, and I've answered. If you want to not hear it, it's a different story. Sir, एक विषय sir. I've answered that question, sir. Honorable member, I've answered that question. Sir, एक और विषय sir. क्योंकि मेरा नाम लेकर के विपक्ष के नेता बोले निर्मला सीतारामन ने इतना अमाउंट ग्रीन के लिए अलॉट किया, ये किसी को मन में रखते हुए अलॉट किया. प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार में कोई किसी का मन में रखते हुए नहीं करते, सबको मन में रखते हुए करते हैं. ये देश को मन में रखता है. इसीलिए ऐसे बयान देना एब्सोल्युटली इज रॉन्ग. If anything, I would want to end in a positive note, but if anything, if such language continues, and I've been repeatedly the target of such language by the leader, I'm not taking anybody's name because the leader is not around here now, throw the allegation and go away. I'm sorry, sir, if allocations were made, if phone calls were made, if relations were given benefit, if jijajis and batijas got benefit, it might be their culture. Under Prime Minister Modi, none of us do any of that. And therefore, any such allegation will be given back in the same language. I'm sorry. I cannot afford to have this kind of language. Sir, अंत में सर, अंत में जी आदिर जी बात करते हैं, बहुत इमोशनली बात करते हैं. हाँ, हमारे ऊपर एलिगेशन डाला, आप एक कम्युनिटी के खिलाफ है. सर, मैं अपील करती हूं आपको, स्पीकर सर, मैं अपील करती हूं आपको, जरा सुनने के लिए क्षमता रखने के लिए बोलिए. सिर्फ 2-3 विषय है सर, सिर्फ 2-3 विषय जो उनको थोड़ा पसंद नहीं लगेगा. सर, आदिर जी ने बहुत गंभीरता से आप एक यू एंटी ये पर्टिकुलर कम्युनिटी ऐसे बोले, मुझे बहुत दुख लगा. नहीं, ही सेड इट. या बट सर, एलोकेशन कम है इसीलिए हम एंटी एक कम्युनिटी है सर. विनम्रता से मैं बोलना चाह रही हूँ सर, एलोकेशन कम नहीं हुआ. सर, इन लोगों को जीजा का नाम लेता है तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है सर. सर चिल्लाने के लिए थोड़ा मदद ले रही हूं सर, पानी पी करके. सर मैं जल्दी खत्म करूंगी सर, मगर प्रोवाइडेड दे हियर मी. सर, बजट में कोई एलोकेशन किसी का भी कम नहीं हुआ. मैं बार बार उसको नंबर के साथ बोल रही हूं. फिर भी क्योंकि नंबर कम हो गया है, ऐसे वो अनुमान रख के
बोलते हैं कि आपने एलोकेशन कम किया इसीलिए उनके खिलाफ है। मगर मैं याद दिलाना चाह रही हूं सर, हिस्ट्री के कुछ पन्नों से, हिस्ट्री के कुछ पन्नों से मैं प्रश्न पूछना चाहती हूं। बजट में नंबर कम नहीं हुआ, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, सबका साथ मैं बोल रही हूं। प्रधानमंत्री जी के बहुत बार बार याद दिलाने वाले लाइन, सबका साथ सबका विकास। फिर भी सर मैं सबका प्रयास भी है। सो प्रश्न सर, प्रश्न पूछ रही हूं सर, मैं प्रश्न पूछ रही हूं, क्या बजट में नंबर अच्छा देने के बाद अगर एक कम्युनिटी को कत्लेआम होता है, उस साल इलेक्शन कमीशन भी बोलता है प्लीज इलेक्शन ना रखो, शायद उस समय के बजट में इतना अमाउंट दिया है उस कम्युनिटी के कारण, फिर भी उस कम्युनिटी का कत्लेआम होने के बाद भी, इलेक्शन कमीशन कहने के बाद भी, इलेक्शन अभी ना करो कहने के बाद भी उस कम्युनिटी के कत्ल खून भी सूखा नहीं है, उधर नेल्ली में जाकर के इलेक्शन करने वाले कौन है? कौन है? कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीमती इंदिरा गांधी। वो उस बजट में बहुत अलोकेशन हुआ मगर कत्लेआम भी हुए असम नेल्ली में उस कम्युनिटी का। इसका जवाब वो देंगे कि नहीं देंगे, वो मैं पूछना चाहती हूँ। दुख से ये बात कह रही हूँ, उस कम्युनिटी के ऊपर पसंद है, मन है, उनके रक्षा कर रहे हैं, तो कैसे ये हुआ? कैसे ये हुआ? फिर बजट, दानिश अली जी आप उनके प्रश्न मैं पूछ रही हूं, आप पूछना चाहिए इस विषय में। सर इतना एलोकेशन किया, मान लीजिए उस कम्युनिटी के ऊपर इतना प्यार है, तो दिल्ली में गले में टायर लगा करके सिखों का कत्लेआम हुआ। क्या हुआ? बजट में एलोकेशन कम था क्या? बजट में एलोकेशन कम था क्या? सो बजट के एलोकेशन के ऊपर आप प्यार का, नफरत का बातें ना करें। आपने इन लोगों का कत्लेआम किए, उस समय क्या उनके बजट के एलोकेशन कितना सर? लास्ट बात, मैं लास्ट बात ये बात बोल रही हूं सर, 1966 में 1963, अरे नेल्ली ची नेल्ली में जो हुआ उसका ची बोलना चाहिए, जैसे ममता बनर्जी ने ची की कविता सुनाए, वो उसका जवाब कौन देंगे? लास्ट बात सर, जवाब नहीं है सर, लास्ट बात बोल रही हूं सर। अगर दिल्ली में 1966 में एंटी काउ स्लॉटर डेमोन्स्ट्रेटर्स पार्लियामेंट के बाहर गो हत्या के विषय में प्रोटेस्ट करने वाले हिंदू सन्यासी को मार पिटाई करने वाले कौन है सर? यही 96 का कांग्रेस पार्टी है सर। सो बजट में एलोकेशन के कारण हम एक कम्युनिटी के नफरत कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये नाटक करने वाले इसे, यही है जवाब मेरा।